Hello everyone, my name is Naveen Kumar and I'm faculty of physics at Rawat Public School. And today in this video we will discuss chapter that is current electricity. Topic is carriers of current. Now we are having different states of matter. In solids, charge carriers are electrons. Okay, now these electrons start flowing. These electrons start flowing whenever there is a potential difference across the terminals of the conductor, and we are making this potential difference with the help of battery. Similarly, in case of semiconductors, we are having two types of semiconductors. One is n-type, second one is p-type. So in n-type semiconductors, majority charge carriers are electrons. And in case of p-type semiconductor, majority charge carriers are hole. Okay, so this is about solid conductors. Okay, now second thing is liquids. In case of the liquids, like electrolytic liquids, in case of electrolytic liquids, charge carriers are positive or negative ions. Just like as examples of liquid is CuSO4. When this current starts flowing in CuSO4, then charge carriers are this Cu plus and SO4 minus. That is, this positive ions and this negative ion is a charge carrier in case of liquid. So positive and negative ions are charge carriers in case of liquid. In case of the ionized gases, positive and negative charged ions and electrons are the charge carriers. So positive and negative ions and electrons are the charge carriers in case of the liquid. Now next thing is vacuum tubes. Like radio tubes, picture tube. In vacuum tubes, charge carriers are emitted by the heated cathodes. Okay, so free electrons emitted by the cathodes are the charge carriers in case of the vacuum tubes. Our next topic is drift velocity. So drift velocity is the velocity, average velocity gained by electrons of a conductor when applied with an external field. इस चीज को समझते हैं. देखो, एक कंडक्टर है अपने पास. बाय डिफॉल्ट कंडक्टर में क्या होते हैं? दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नाउ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, हमने इन पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की. इन केस ऑफ द कंडक्टर, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन. इनकी कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सब रैंडम मोशन में इधर उधर है. तो लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, एंड एक तीसरा इलेक्ट्रॉन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u3 एंड सो ऑन. ओके, नाउ अगर हम इस इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकालें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन की? इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, एवरेज वेलोसिटी इज 0. That means in absence of any external field, average initial velocity of all the electrons which are in random motion, average velocity is 0. Now let's suppose we have applied an external field of magnitude E. Okay, electric field is a vector quantity as we know. Okay, so हमने जैसे ही external field apply की, so all these electrons they will start moving in a particular direction which is just opposite of applied field. ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे. अब एक कोई भी कंडक्टर, उसमें 2, 4, 5, 10 तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है. n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जब एक साथ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? दे विल कोलाइड विद ईच अदर. ओके, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब किसी से कोलाइड करेगा तो क्या होगा? स्लो हो जाएगा. ओके, चलो उस चीज को भी हम देखेंगे. सो
when electric field is applied, then there is some acceleration gained by these electrons. Okay, how much force that electron will experience? That is, this is the force that electron will experience. Okay, force का एक और फॉर्मूला भी होता है, that is force equals to mass into acceleration. Okay, now this is equation number 1, this is equation number 2, दोनों को इक्वेट करेंगे तो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई इज इक्वल्स टू एम ए एंड ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम. सो दिस इज द acceleration attained by these electrons while we are applying this external electric field. जब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होंगे इस कंडक्टर के अंदर, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इनमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी और वो एक्सेलरेशन कितनी होगी? ए इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एम. जो एम है यहां पर दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, now let's suppose because of this acceleration these electrons are moving and they are attaining this acceleration because of electric field, they are moving. So एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? They started with some initial velocity u1 and they are accelerating with acceleration a, and in time t1 this will be the final velocity of electron 1. Similarly, electron 2, u2 plus a t2. Similarly, v3 is equals to u3 plus a t3 and so on. So vn is equals to un plus a tn. Okay, these are the final velocities attained by these electrons because of this applied external electric field. Now, as per the definition of drift velocity is average velocity gained by these electrons of a conductor when applied with external field. Okay, तो हम क्या करेंगे? इनका एवरेज निकालेंगे. That average is drift velocity. Vd is equals to जितने भी वेलोसिटीज है उनका सम कर दो. Vd is equals to v1 plus v2 plus v3 and so on. Vn divided by n. This is average of n number of velocities attained by these electrons. Okay. तो देखो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ v1 v2 v3 and so on in that equation, final equation. तो vd, that is drift velocity, is equals to u1 plus at1 plus u2 plus at2 and so on. Finally we are adding vn plus atn and average, that is n. Okay, so similar terms को एक साथ लिखेंगे तो vd is equals to u1 plus u2 plus u3 and so on डिवाइडेड बाई n प्लस, देखो यहां पर एक्सेलरेशन हर टर्म में कांस्टेंट है तो हम इसको कांस्टेंट ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, नॉट कांस्टेंट, कॉमन ले लेंगे. दिस इज t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन एंड डिवाइडेड बाई n. ओके, नाउ ये वाली जो टर्म है इसको हमने पहले ही बताया था, दैट इज एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो हम इसको क्या करेंगे? vd इज इक्वल्स टू 0 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3
and so on Tn divided by n. अब देखो जो T1, T2, T3, T4 and so on till Tn divided by n, this is the एवरेज टाइम, और इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम. मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज टी टाउ. दिस इज वीडी. ओके, नाउ दिस टाइम इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दैट इज अ रिलैक्सेशन टाइम. ओके, एंड दिस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सफरिंग कोलिजन. ठीक है, और सिंपली एवरेज हाउ मच टाइम इलेक्ट्रॉन वाज रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट. ओके, दैट इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल टाउ. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस अबव इक्वेशन. सो Vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E कैपिटल E टाउ डिवाइडेड बाय m. नाउ अब इन सारी की सारी चीजों को देखें क्या है. Vd इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्मॉल e इज द चार्ज ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इज द एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ is average relaxation time, and this small m is the mass of electron. So this is drift velocity of the charged particles. Now our next topic is relation between current and drift velocity. Okay, so for this topic let us understand the diagram first. So for this we are having a conductor of length L. Cross section area of this conductor is this capital A. Okay, we have applied a battery which is producing electric field. ठीक है, now a current I is flowing in this circuit. Electron will start moving from this right hand side to the left hand side of the conductor. Okay, now let the number of electrons per unit volume is equals to n. N number of electrons are present, and number of electron in this entire length, that is length L of this conductor, is equals to n multiply with volume of this conductor, that is n is equal electrons is equals to NaL. These are the total number of electrons in the entire length of the conductor. Okay, now total charge contained in the entire length of the conductor is equals to, this is the charge NeAl. This is the total charge contained by this entire assembly. Okay, now we know that whenever these electrons starts moving, then they are taking some time. So let's suppose they are taking a time t. So formula for time t is speed is equals to distance upon time. Time is equals to distance upon speed. Distance, how much distance these electrons are covering, that is L, and with which speed these electrons are moving, this is drift velocity. Okay, now substitute the length. So this is time is equals to L divided by Vd. Okay, now we know that current is equals to, what is the formula for current, that is Q by T. Now we are having both the values, we are having value of Q and we are having value of T. Substitute value of Q and T in this equation. So Q is NeAl and T is L divided by Vd. So L cancel out, so I is equals to ANEVD. So this is the relation of electric current with drift velocity. Thank you.